Can you please write yes in the chat if you can hear me and see me? Okay, great. Thanks for the confirmation. Good evening, everyone. We'll start the session in next 2 minutes. And I hope for the people who are in Maharashtra, उन्होंने voting आज जाके vote किया है. It's very important. You are audible, sir. Vote हो गया. Yes, thank you everyone for the confirmation. We'll start the session as soon as Harsh sir joins us. And I have received an update regarding the crude oil का जो trade हमने दिया था. It has been profitable. We have received a message from Ashish sir. Crude oil live expiry 5,700 put suggested at 16. Target was 40. Target achieved. Day high was 80. Congratulations for the people जिन्होंने crude oil में profit book किया होगा. Let me just check with Harsh sir. No, Harsh Doshi sir. Our expert is Harsh Doshi, who takes care of our commodity expiries. We have booked a lot profit in his sessions as well previously. So guys, I just had a word with Harsh sir. We will be starting. He is joining us in a minute and then we are good to go. Next week, guys, we have 2 sessions, one on Friday and one on weekend. The date and time are yet to be confirmed. It would be on candlesticks. Until now, there are no changes, but yes, we will be doing the session in English and Hindi on Friday, and then we will be doing on in Gujarati language on the weekend. So we are starting a knowledge series. English Hindi is something जो हम करेंगे उसके add-on में we are bringing in some regional languages as well. So daily call for crude and natural gas. Priyanka ji, you can check the commodities channel. वहाँ पे we post all the trades regarding and reports regarding commodity currency, and it seems Harsh sir has joined us. Sir, can you hear me? Yes, Anuj, you're audible. Great, sir. Even you are audible. You can take a minute, turn on your camera, share your screen, and then we are good to go. All right. I think we'll start in a couple of minutes. Okay. Sure, sir. So good evening, everyone. My name is Anuj Sharma. I am your community manager working at Motilal Oswal, managing our community called Stockomo. Every day we have these live trading sessions, and today we have a holiday, but still we are here because the global markets are open and we have commodity expiry today. We have Harsh Doshi sir with us, who will be taking us ahead, who will be giving us trade, giving an overview of the commodity markets, and at the same time, who will be giving us trade, which we hope would be profitable. As per my experience and the last previous sessions, it has been profitable. And Harsh sir, we all hope कि आज जो आपकी streak है वो continue होगी. So handing it over to you, you can share your screen and then we are good to go. Yes, Anuj, of course. Okay. Thank you, Anuj. So, good evening, everyone. Welcome to the natural gas pre and silver mini live expiry session. So, जैसे कि हमें पता है कि we do meet during expiry sessions once or twice in a month. So, generally जो होता है कोई भी commodity का expiry monthly contract जिस दिन expire होता है उस दिन हम जुड़ते हैं
to update and give a live expiry trades जहाँ पे we connect, we it is sort of a learning plus earning type of session for all of us. So आज हम जुड़े हैं दो एक्सपायरी साथ में है. नेचुरल गैस प्री एक्सपायरी है, दैट इज 1 day बिफोर एक्सपायरी, एंड सिल्वर मिनी का जो है वो एक्सपायरी सेशन आज का है, टुडेस एक्सपायरी. सो जनरली वी मीट फॉर वन एक्सपायरी, सिंगल एक्सपायरी होती है, बट आज जो है दो एक्सपायरी है. सो विच इज एडवांटेज फॉर अस. नेचुरल गैस और सिल्वर मिनी में जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा आज के दिन, and hopefully we gain maximum out of this session, and you guys enjoy and learn from the session along with um, making it profitable as well. So I would like to share my screen now. Okay, so start करते हैं सिल्वर से. As we know that overall precious metals में जो है ये पूरे मंथ में काफी volatility रही है, and we have seen movement on both the sides. Initially जो है आई थिंक दिवाली के टाइम पे जो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर था वो काफी बुलिश था गोल्ड एंड सिल्वर के लिए. उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से करेक्टिव मूव आया आफ्टर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. सो उसका जो है वो एक इम्पैक्ट हुआ है स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में, एंड वी हैव सीन कि गोल्ड एंड सिल्वर ने स्लाइटली नया हाई बना के करंटली इट इज स्टैंडिंग ऑफ हाइस, और अभी एक करेक्टिव मूव देखने मिला है जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर रफली 10 to 12% करेक्ट हुए आफ्टर द सक्सेसिव रैली. एक शार्प रैली के बाद हमने फाइनली एक करेक्टिव मूव देखा बोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड उसके बाद इन द लास्ट वीक एंड द स्टार्ट ऑफ दिस वीक वी हैव सीन कि एस्केलेशंस जो है यूक्रेन और रशिया के वॉर में जो है वो बढ़ता दिखा, जिसकी वजह से we have seen some sort of strong recovery and sharp rebound in both gold and silver. तो अभी हम थोड़ा टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं अबाउट सिल्वर. सो लुकिंग एट द इंट्राडे चार्ट, सिल्वर में दिस इज आवर 15 मिनट्स चार्ट. देन विल मूव टू मल्टीपल टाइम फ्रेम्स वन बाय वन. तो अभी अगर हम इंट्राडे चार्ट की बात करें, यस सिल्वर ने एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन बिल्कुल दिया है, बट ओवरऑल आज का अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, स्टिल देयर इज क्लैरिटी येट टू कम. एक अभी भी थोड़ा एक अनक्लियर ट्रेंड में. सो अगर हम देखें कि डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद आज फिर से गैप डाउन खुला, तो आई थिंक अभी थोड़ा एक कंफ्यूजन जोन में, थोड़ा इनडिसाइसिव लग रहा है. सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट फॉर नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच करते इन सिल्वर. लुकिंग एट द इंट्राडे चार्ट, दिस वाज द 15 मिनट चार्ट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेली चार्ट, चांदी में डेली चार्ट अगर हम देखें, एक स्टीप फॉल के बाद काफी एक अच्छा डिक्लाइन जो हमने देखा रिसेंटली, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग bullish reversal pattern बना हुआ है which is called as hammer pattern. So this is regarded as widely bullish, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ये एक साइकोलॉजी बताता है कि earlier bears were in control and then we have seen that bulls took over the control and a corrective rally, और फिर से आज गैप डाउन मूवमेंट हुआ. तो आई थिंक लुकिंग एट द करंट सेटअप डेली चार्ट में अभी भी जो रिकवरी मोड में है सिल्वर, वो आगे चलते भी कंटिन्यू करेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं कि समहाउ आरएसआई जो है उसमें भी रिवर्सल देखने मिला, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिला.
we'll move to intraday chart. So अगर हम intraday chart भी देखें 60 minutes में, we have seen the way that prices were making series of new lows, but RSI जो है was making new high and it failed to confirm the price lows basically. तो ये एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट जोन में हो सकता है. And then we have seen swift recovery. So looking at the current setup, अभी भी इंट्राडे चार्ट में जो ट्रेंड है वो अनक्लियर है. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर क्लैरिटी. बट यस, अगर आज का जो हाई है 90,120 का अगर वो निकलता है तो डेफिनेटली हायर लेवल्स टेस्ट करने आ सकता है. बिकॉज हमने देखा कि किस तरीके से डेली चार्ट में भी जो 60 मिनट चार्ट में भी जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो थोड़ा पॉजिटिव है. तो बायस गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट फॉर टुडे थोड़ा पॉजिटिव चलते दिख सकता है अगर आज का हाई ब्रेक करता है और होल्ड करता है तो. सो फॉर नाउ आई एम नॉट पुशिंग एनी ट्रेड इन सिल्वर एज सच बिकॉज आई एम स्टिल वेटिंग फॉर मोर क्लैरिटी. तो अभी इसको वेट एंड वॉच में रखेंगे. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट candidate for today's expiry, which is natural gas. So guys, हमने देखा कि नेचुरल गैस में भी ओवरऑल आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द नवंबर वी हैव सीन कि इनिशियली फर्स्ट वीक में काफी नीचे करेक्ट हुआ एंड उसके बाद मिड टू लेट नवंबर जो टाइम पीरियड था, नॉट रॉन्ग आई थिंक रफली अराउंड लास्ट वीक, फाइनली उसने तेजी पकड़ी और हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट मंडे एक 10 to 12% का मूव देखने मिला नेचुरल गैस में. इट वाज मेनली बिकॉज कि एक फंडामेंटल सपोर्टिव भी था प्राइसेस के लिए, जैसे कि टेम्परेचर आउटलुक जो है, तो वेदर कंडीशंस काफी कूल हो गए थे इन यूएस, सो दैट सपोर्टेड द राइज इन द प्राइसेस. अलोंग विद दैट एक सप्लाई डिसरप्शन भी था जिसमें नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जो है वो घटते हुए दिखा. बट सरप्राइजिंगली लास्ट वीक जब थर्सडे या फ्राइडे को इसका स्टोरेज डेटा आया था, इट वाज नॉट सपोर्टिव और स्टोरेज डेटा बढ़ के आया. बट नाउ अगेन ऑन मंडे वी हैव सीन कि टाइम एंड अगेन थोड़ा डे ऑन डे प्रोडक्शन फिर से कम होते गया एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि कल जब उसका डेटा है नेचुरल गैस का, उसमें मे बी प्राइसेस के लिए सपोर्टिव हो और इन्वेंट्री घट के आए. सो ये था एक मैक्रो पुश कि क्यों ऐसा हो रहा था. अभी बात कर लेते हैं कि टेक्निकल आउटलुक क्या है नेचुरल गैस में. सो लुकिंग एट द आर्ली चार्ट ऑफ नेचुरल गैस, वी हैव सीन दैट इनिशियली it did give the triangular breakout and after the break of this triangle एक follow up buying देखने मिला and the height of the triangle was our target which was achieved and again followed by a corrective fall which was sort of higher low. तो ओवरऑल हमने देखा कि किस तरीके से पहले जहाँ पे वो 220 324 लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था, उसके बदले इस बार 227 228 लेवल पे हायर लो बनने के बाद फॉलो अप बाइंग देखने मिला. एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस आर अवेयर, हमारा जो नेचुरल गैस का पाथफाइंडर रिपोर्ट भी था उसमें हमने बाय कॉल जनरेट किया था अराउंड 231 to 235 के रेंज में एंड आवर सेकंड टारगेट वाज 262 एंड फर्स्ट टारगेट वाज 250. सो the view has played out very well. हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए एंड गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा स्टैंड है वो बुलिश ही रहेगा. विल डिस्कस व्हाई. सो ये हमने देख लिया नेचुरल गैस आर्ली चार्ट का आउटलुक. नाउ विल मूव टू नेचुरल गैस डेली चार्ट. सो अगर हम नेचुरल गैस का वीकली चार्ट देखें, यस,
सो अगर हम नेचुरल गैस का वीकली चार्ट देखें, आर टेक्निकल बेट वाज वेरी सिंपल. हमने देखा कि इट वाज स्टक इन मिड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पैटर्न, जहाँ पे प्राइजेस एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे, एक ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ था. एंड इट वाज ऑब्वियस कि देयर आर चांसेस दैट इट वुड ब्रेक ऑन आइदर साइड, बट प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ ज्यादा थी. क्यों? बिकॉज ऑन द वीकली चार्ट वी हैव सीन कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना नेचुरल गैस में. दिस इज कॉल्ड एज पियर्सिंग लाइन रिवर्सल पैटर्न. A very It is considered as a very strong reversal, and the success ratio as compared to other reversal pattern is pretty high. So ये bet जो था वो लेने जैसा लग रहा था, तो इसमें हमने ये bet लिया था. एंड देन वी हैव सीन कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो 250 और लेवल के आसपास आया, उसके बाद सेकंड ब्रेकआउट भी दिया नेचुरल गैस ने. एंड प्राइजेस आर नाउ लीडिंग टू अपवर्ड मूवमेंट. सो नाउ हमारा की रेजिस्टेंस जो है वो 262 लेवल पे ही है, जिसके ऊपर वो ऑलरेडी आज ट्रेड कर रहा है. एंड इफ दिस मूव कंटिन्यूस, इमीडिएट बेसिस पे पोजिशनली हमारा अपसाइड में टारगेट जो है वो रफली अराउंड 275 और लेवल्स पे होगा. तो नेचुरल गैस में ओवरऑल बाइंग ऑन डिप्स स्टैंड है जो हम मेंटेन कर रहे हैं. इसमें भी अगर हम इंट्राडे के बारे में डिस्कस करें, मूवमेंट के बारे में, तो ओवरऑल एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है आफ्टर द ओपन, बिकॉज इट हैज ओपनड बाय अ मैसिव गैप अप ओपनिंग. we could see that yesterday's session it closed somewhere around 252, and आज it has directly opened at 262, which is roughly 10 odd rupees. तो 10 रुपए से ऊपर आया हुआ है नेचुरल गैस का प्राइस. सो गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली वी मेंटेन बुलिश स्टैंस एंड बायस रिमेंस पॉजिटिव. तो नेचुरल गैस में जो है वो तेजी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी. थोड़ा इसमें वेट एंड वॉच करते हैं. आई एम वेटिंग फॉर सर्टेन बुलिश मूव. डेफिनेटली इसमें वी कैन एक्ट बिकॉज इट लुक्स एक्शनेबल. टिल द टाइम, Anuj, are there any questions? So right now there are okay, we have one. Can hold NG 260 call? Yes, we can definitely hold NG 260 call as long as prices are holding about 257, 258. There are possibilities that it might test 270 followed by 275 on the higher side. Because ओवरऑल व्यू जो है बाय ऑन डिप्स का ही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि होल्ड करना. बट अगर 258 का लेवल नीचे की तरफ निकलता है तो एग्जिट करना. बट इसमें हम सेलिंग नहीं करेंगे बिकॉज ये अभी सेल में नहीं है, ये बाई में ही है. अगर कोई डिप आता है एंड इफ वी कैन एंटर अराउंड 256 257, अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाई साइड में एंटर करेंगे. और हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा 262 followed by 270. सो ओवरऑल जो है इसमें बाय में ही रहना है. Sir, support levels for silver? सो अभी सिल्वर का फ्यूचर्स जो है वो 90,200 चल रहा है, 9174 चल रहा है. एंड 9120 का जो उसका रेजिस्टेंस था इंट्राडे चार्ट में, वो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है. तो यहाँ पे अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा समवेयर अराउंड 89,600 लेवल पे. 89,600 could act as a strong support, which is going to be our support one. एंड उसके नीचे सेकंड सपोर्ट रहेगा 89,000 पे. तो ये दो सपोर्ट है, दो इंपॉर्टेंट लेवल है टू वॉच आउट. Sir, your view on gold? Yes. So yes, guys.
this is gold futures contract, current December month. Same in gold as well. We have seen that after a steep decline, the fall was arrested and there was a pause for the time being. Reason was same technically. If we see कि इंडिकेटर वाइज अगर हम देखें मोमेंटम इंडिकेटर ने अपना जो व्यू है वो नेगेट किया था जहाँ पे प्राइस फॉल कर रहा था बट RSI has made higher low wherein price is making new low. So RSI was indicating sort of reversal in this chart and एक bullish divergence हमने देखा near term में followed by higher high and higher low structure and the rally continued till about 75,800 which was our target. आगे चल के 75,800 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है बट एनी सस्टेनेबल मूव अबव 75,800 we can expect the rise to continue. साइड में 76,300 लेवल तक तेजी चल सकती है गोल्ड में एंड इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट अभी 75,200 लेवल पे होगा. As long as prices are holding about 75,200, we can expect a corrective rally from here. So next leg of rally अगर continue करती है above 75,800, we can expect it to test 76,300 on the higher side. Sir, your view on zinc? यस गाइस, अगर हम जिंक में देखें डेली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग सेटअप बना हुआ है. वी कैन सी कि ओवरऑल आई थिंक रफली अराउंड 6 to 7 months it was trading in a broad consolidation range. इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल कहेंगे because it has been in a consolidative phase and then after a break prices ऊपर की तरफ प्ले आउट हुए और 300 के लेवल पे उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया एंड उसके बाद इफ वी सी द अपर ट्रेंड लाइन ऑफ द चैनल इज स्टिल एक्टिंग एज अ सपोर्ट जहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो इनिशियल रेजिस्टेंस था प्रीवियसली इज नाउ एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड देन आफ्टर टेस्टिंग 270 लेवल एक फिर से है पुल बैक देखने मिला. सो करंटली इट इज कोटिंग एट 280. यहाँ से अपसाइड में 284 285 लेवल टेस्ट करने इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस पे बिल्कुल आ सकता है एंड एनी सस्टेनेबल मूव अबाउट 285 ओवरऑल बुलिशनेस जो है और बढ़ जाएगी टेस्टिंग 295 300 ऑन द हायर साइड. तो अभी इमीडिएट अपसाइड में 285 का लेवल पकड़ के चल सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी 270 लेवल पे ही है which is intact now. So we can see some pullback going forward in zinc also. So do we have any trade as of now? Like people are eagerly waiting for that. Yes, Anuj. प्लान तो वही है कि एक अच्छा ट्रेड निकल सके बट थोड़ा मार्केट जो है लिटिल लेस सपोर्टिव बट स्टिल डेफिनेटली एक अगर अच्छा मूव मिलता है we can definitely enter for the trade. Till the time we can also discuss some data. So in data .com पे जो है ये सारे डेटा है हम देख सकते हैं सारे अपडेट्स यहाँ पे Harsha, can you hear me? Hello, Harsh.
Yes, sir. You are visible now. Yeah, I think I lost the connection. Yeah, we can hear you now. So do we have any positional call अगर हम अभी intraday नहीं ले पा रहे हैं, or if you don't have any expiry trades, do we have any positional call? पोजिशनल कॉल्स में विल कम टू दैट. अभी थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड जो ट्रेड्स है उसमें वी कैन सी कि कहाँ पे कुछ ट्रेड निकलता है. इनफैक्ट चांदी में भी अगर हम देखें तो 90,350 90,400 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है विच इज हार्डली 200-250 rupees away from here. So it is just that we don't act on the wrong side. I'm still waiting कि अगर कोई convincing move मिले तो. Same for natural gas. अच्छा अपसाइड देखने मिला बट जो थोड़ा एक मिसिंग है. Sir, we Okay, have a so coming question around. So we have a question around silver. Please give your long view for silver as I'm holding 20 lots of silver with average of 95K. What should I do? Hello, Harsh sir. Yes, sir. We can see you now. I'm so sorry. Silver, right? Yes, you are audible now. Yes, Anuj, can you repeat the question again of silver? Sure, just give me a second. Sir, please give your long view for silver as I'm holding 20 lots with average of 95K. What should I do? Okay, average of 95,000. Firstly, though, I would suggest that whenever if the position is against the view or against the trade which we have taken, I would suggest that keeping a stop loss is must. जैसे कि अगर 95,000 पे हमने एंट्री किया है, looking at current market price, it is trading at 90,200. So overall एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जनरली फॉलो करते हैं. इसमें रिस्क अगर फेवरेबल है कहीं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट, सजेस्ट करूंगा कि ऐसे पोजीशंस में कभी भी एक स्टॉप लॉस रखना. अगर फॉर एग्जांपल हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 2,500 रुपए से तेजी अगर होती है तो उसमें 1,000 से 1,500 रुपए तक का हमारा स्टॉप होना चाहिए. एंड इफ अ स्टॉप इज हिट वी विल एग्जिट द पोजीशन बिकॉज कैसे होता है वंस वी आर स्टक देन वी हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसमें हिट भी आता है. बट बिकॉज हमने ऊपर के प्राइस में लिया है तो लुकिंग एट द करंट सेटअप पोजिशनली अगर हम बात करें, अगर ये रैली कंटिन्यू करती है तो यहाँ से एक 92,500 लेवल तक अपसाइड देखने मिल सकता है ये रिकवरी में. एंड 92,593 और लेवल के आसपास जो लॉन्ग पोजीशन है
वो एटलीस्ट फॉर देन एग्जिट कर सकते हैं, और फिर फ्रेश कुछ बिठाना है तो बिठाएंगे बाद में. बट अभी के लिए तो जो है वो लेवल रहेगा एक एग्जिट के लिए. एंड अदरवाइज इमीडिएट रेजिस्टेंस 91,500 के लेवल पे भी है. पार्शियली वहां पे एग्जिट करना तो कर सकते हो, बट वुड सजेस्ट कि डोंट book your losses short, don't run it for longer period of time. यही एडवाइस रहेगा. Harsha, can you hear me now? Yes, Anuj, I can hear you. So I guess it's around 6:30. Do we have any scope of trade, or the session would end in no trade? And guys, also I want everyone to remember that taking no trade is also a trade. It's important to save capital rather than taking a high risk trade. Okay, Anuj, I think सिल्वर में मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिखा है. हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड में बिल्कुल मूवमेंट देखने मिल सकता है. सो नाउ करंट प्राइस इज 89,967. सो स्ट्राइक टू फोकस would be silver mini call 90,000. कॉल साइड रहेंगे फॉर द इंट्राडे ट्रेड. Currently 90,000 silver mini call is around 296,300. तो इसमें हम एंटर कर सकते हैं. बाय सिल्वर मिनी कॉल 90,000 at 290. स्टॉप रहेगा हमारा इसमें 99 का फॉर द टारगेट्स ऑफ 650. तो अपसाइड में 650 जो है वो हमारा टारगेट रहेगा, बट 1:1 अगर प्ले आउट होता है सो डेफिनेटली समवेयर अराउंड 500 450 to 500 के रेंज में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं. अभी है इसका प्राइस 281. सो आई वुड सजेस्ट वन कैन बाय 90,000 कॉल इन सिल्वर मिनी. एंड अगर फ्यूचर्स की हम बात करें तो अपसाइड में 90,500 तक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आज का डेली लेवल जो है वो उसने ब्रेक किया है फाइनली. सो द हाई हैज बीन ब्रीच एंड ओवरऑल इट इज स्टिल इन द रिकवरी जोन, रिकवरी मोड. तो अपसाइड में 90,500 बिल्कुल आ सकते हो बेस्ड ऑन द इंट्राडे चार्ट. दिस ट्रेड इज ओनली फॉर टुडे. एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 91,000 का. दिस इज बेस्ड ऑन फ्यूचर्स, बट आवर ट्रेड फॉर कॉल ऑप्शन इज इंटैक्ट, तो इसमें बाइंग कर सकते हैं. So guys, we have initiated our trade, like we have shared a trade, silver mini 90,000 call, buy near 290, stop loss 99, target 650, partial profit 450 से 500 के बीच में you can book. The trade is visible on your screen. And sir, till when should we hold the trade? Yes, Anuj. So one can hold this trade till about 10 p.m. today, because I think after 10:30 10 से 10:30 के आसपास हमारा बुकिंग टाइम होगा. बिकॉज चांसेस है कि इन केस इफ इट रिमेन्स साइडवेज तो प्रीमियम्स डाइल्यूट हो सकते हैं. आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए 10 से 10:30 के बीच में इसको एग्जिट कर सकते हैं, और आर टारगेट 1 and target 2 whichever is earlier. Got it, sir. Sir, is there anything else that you would like to add before we end the session? Yes, Anuj. So वही था आज का सेशन में. थोड़ा हमने देखा कि लर्निंग पार्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा था, because sometimes when market movement is not supportive, it is better to wait
बट यस, एज पर डिस्कशन, जैसे सिल्वर ने आज का हाई ब्रेक किया, हमारा व्यू प्ले आउट हुआ, 90,100 का ब्रेक करने के बाद एक फॉलो बाइंग देखने मिला. सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो हमने इसीलिए सेशन शुरू होते कोई ट्रेड पुश नहीं किया, बिकॉज आई थिंक तभी थोड़ा साइडवेज था दोनों ही काउंटर. सो वही कहना चाहता हूँ कि मतलब टाइमिंग, मतलब वी कैन नेवर टाइम द मार्केट, बट यस, व्हेन द सेटअप इज अनक्लियर, बेटर टू होल्ड एंड वेट. एंड जब भी कोई क्लैरिटी आती है, सो डेफिनेटली वी कैन एक्ट एंड अकॉर्डिंगली टेक द ट्रेड्स. So guys, that will be all. Thanks a lot everyone. Keep an eye out on the trade. 10 बजे से पहले exit कर लीजिएगा. We have also mentioned कि आप partial profits का book कर सकते हैं. Thanks a lot Harsha for a very knowledgeable session. Thanks a lot everyone. Yes, Anuj. So before ending, I would like to give the update. Currently, it is trading at 336. So in case if someone wants to buy, 310 के आसपास एंटर कर सकते हो. ओवरऑल अपसाइड है, और किसी ने अगर ऑलरेडी बाई किया हुआ है तो प्लीज होल्ड करे. वेट फॉर आवर फर्स्ट टारगेट समवेयर अराउंड 500, 450, 500. वहां पे अगर चाहिए पार्शियल बुकिंग कर सकते. एंड in case if we are booking full profits, I'll definitely update it to Anuj, and then फिर वो स्टोको में भी अपडेट हो जाएगा. Okay. Thank you everyone. Thank you. Yes.